Now, guys, what is this task about? I am sharing writing task 2, which has the same topics. Means the topic is advertising and advertisements. If the topic comes on this, so what will you do? You will change. You will write in. You will have the same kind of vocabulary for all the type of tasks. Only the content will differ in a वेरी डिफरेंट मैनर लाइक कैसे मैं आपको बताती हूँ जैसे टॉपिक इज अबाउट द एडवर्टाइजिंग या एडवर्टाइजमेंट्स वोकैबुलरी सारी सेम रहेगी वर्ड्स सेम रहेंगे आइडियाज वैसे रहेंगे क्योंकि टॉपिक तो एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर है द टॉपिक इज अबाउट द एडवर्टाइजमेंट्स सो उसमें मुझे चेंज कैसे करना है फर्स्ट ऑफ ऑल विल जस्ट लुक फॉर व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव कम अब राइटिंग टास्क 2 वहाँ पे भी ऐसे ही करना है जब आपको एग्जाम में आएगा what you will do is when we will get the exam on advertisements you will just write the words जो आपको already advertisements पे आते हैं and I always ask the students to change कर लो उसको अलग अलग टॉपिक वाइज vocabulary लिख के रख लो ताकि वो आपके माइंड में बैठ जाए now the first topic is people are surrounded by advertising which has an increasing effect on our lives do you think the positive effects of this outweigh the negative effects the question is about do you think the positive effects outweigh yes outweigh this negative effects so ये question है टॉपिक है कि वो इंक्रीजिंग इफेक्ट है हमारी लाइफ के ऊपर क्या आपको लगता है कि पॉजिटिव इफेक्ट्स और नेगेटिव इफेक्ट्स इसका मतलब आई विल बी टॉकिंग अबाउट बोथ द थिंग्स तो मेरे माइंड में दोनों चीजें होनी चाहिए Next is advertising discourages the people from being different individual by making us all want to do the same and look the same. Means advertising क्या करती है वो discourage the people from being different individual क्योंकि हम सारे एक ही जैसे obviously when I'll see an advert I'll try to do the same thing and I'll be looking the same. So do you agree or disagree? Now the question here is do you agree or disagree? It means हम इसमें चूज करेंगे एक पॉइंट यू विल स्टैंड यू विल टेक अ स्टैंड फॉर वन पॉइंट ओनली वेदर यू अग्री विद दिस और यू डिसअग्री विद दिस थर्ड पार्ट a large number of advertisements nowadays are targeted at children. Many people say that this has negative effects on the children and therefore should be banned. To what extent do you agree or disagree? लार्ज अमाउंट ऑफ जो एडवर्टिजमेंट्स हैं वो बच्चों को टारगेट करते हैं वो उनको एल्योर करते हैं अट्रैक्ट करते हैं एंटाइज करते हैं मैनी पीपल से कि ये नेगेटिव इफेक्ट होगा चिल्ड्रन के ऊपर और इसलिए इनको बैन करना चाहिए to what extent do you agree or disagree? It means you can be partial. You can talk about both the things, whether they give information to the children also. In the another paragraph, you will talk about they are harmful. Now, the next one is consumers are faced with increasing number of advertisements from competing companies. To what extent do you think consumers are influenced by the advertisement? जो consumers हैं means हम हैं the local individuals people do they get influenced by the advertisements पहला question ये है इसका मतलब कितनी हद तक वो इन्फ्लुएंस है सो यू विल गिव अ पैराग्राफ इन लाइक दिस नेक्स्ट इज व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रोटेक्ट देम तो क्या करना चाहिए ताकि हम इंडिविजुअल्स को ऐसे ट्रैप में फंसने से टू गेट इन्फ्लुएंस हम उनको बचा सकें सो दीज आर टू क्वेश्चंस एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट बात वही है कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं हेयर ऑल्सो अगर वो चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं सो दे आर सेइंग व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स and why it should be banned. Here also, do you think the positive and the negative effects outweigh each other or what? Then, here also, they want to do the same and look the same by watching the advertisements. So, more or less, everything, every topic just talks about positive effects and the negative effects. Means, what are the advantages of advertisements? What are the disadvantages of advertisements? Right? Only उसका तरीका द वे हाउ टू राइट अ राइटिंग टास्क दैट इज डिफरेंट सिर्फ लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है सो वेन एवर यू गेट द क्वेश्चन we'll be covering up all types like this daily this is advertisement then we can go for education we can go for jobs career ऐसे ही करेंगे
आपके पास 4 टास्क भी हो गए आपके इस वे से, ठीक है? और एक ही दिन में आपने 4 टास्क कर लिए, उसके आइडियाज़ भी बना लिए और इसका काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो बिकॉज़ आफ्टर दैट यू विल आस्क फॉर कि मैम व्हाट वाज़ देयर इन द क्लास एंड यू विल नॉट कम टू नो। आई विल आस्क यू टू राइट अ पैराग्राफ मीन्स राइट टास्क ओवर दिस। आपको इसके ऊपर टास्क भी करके देना है मुझे। नाउ लेट्स गो टू द वोकैबुलरी पार्ट। जब हमने एडवर्टाइजमेंट्स की बात करनी है, व्हाट काइंड ऑफ वोकैबुलरी वी कैन यूज। लेट्स गो अहेड। दीज आर द वर्ड्स आई विल बी मैम टेलिंग। यस। जो आपने दिए 4 पैराग्राफ, लाइक इसकी इंट्रोडक्शन प्लस BP1 प्लस BP2 पूरा एंड लास्ट कंक्लूजन, राइट ठीक है? राइट राइट राइट, विल बी डिस्कसिंग नाउ एंड यू विल कंप्लीट इट। ठीक है। ओके मैम। Vocabulary for advertisements is, first thing is what type of advertisements are these? First of all, वो किस फॉर्म में आता है? होर्डिंग्स में, बैनर्स में, या फिर वो प्रिंट मीडिया है, मीडियम है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है? एडवर्टिजमेंट्स कैसे आती है? एडवर्टिजमेंट्स प्रिंट मीडियम में मतलब न्यूज़पेपर्स में होती है, मैगजीन्स में होती हैं एड, और इलेक्ट्रॉनिक में मतलब वो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, वो किस तरह की एड्स होती हैं? सोशल मीडिया पोर्टल्स जितने भी हैं। इट इज़ अ परसुएसिव मीडियम, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, परसुएसिव मीडियम, आप ये ज़रूर यूज़ करो। एक और वर्ड होता है यूबिक्विटस, आई हैव रिटन दैट थिंग ऑल्सो, यूबिक्विटस। Persuasive and ubiquitous, you can take the screenshot later or I'll send you the recording also. Ubiquitous means the thing which is present everywhere. So obviously, advertisements are present everywhere, media is present everywhere. So you can use this word like print media or advertisements are ubiquitous nowadays, and especially advertising, they are targeting the children. So you can talk like that, right? Then next is adverts. Advertisements को आप adverts बोल सकते हो। एडवर्टिजमेंट्स की वजह से वी पाइल अप द थिंग्स, पाइल अप द थिंग्स मतलब हम स्टैक करके रख लेते हैं उनको, हम उनको एक ढेर बना के रख लेते हैं, right? We do not need the things actually, but when we get we free offers और टाइम टू टाइम जो एडवर्टिजमेंट्स है, दे bombard the people, मीन्स एडवर्टिजमेंट जो हैं वो bombard मीन्स इतनी ज़्यादा एडवर्टिजमेंट्स आती हैं with any new product and people rush to buy it, and that and it appears that all people are doing the same thing. Obviously if we get 50% off, 80% off, तो हम ऐसे ही करते हैं, pile up कर लेते हैं चीज़ें, whether we need it and we don't need it, that depends. Next is tempt. Tempt मतलब हमें वो allure करते हैं, entice करते हैं, हमें वो चीज़ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, टेम्प्ट करते हैं बाय गिविंग डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्काउंट्स। रेलेवेंस, वो चीज़ रेलेवेंस है, इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है, इसेंशियल है कि नहीं है, तो हम फिर भी उसको ले रहे हैं। आउटडेटेड भी कोई चीज़ होती है, उसको भी वो तैयार रहते हैं। आउटडेटेड मतलब ऑब्सोलीट हो जाती है, विच इज़ नेवर इन यूज़। ऑब्सोलीट मतलब विच इज़ नेवर इन यूज़। देन एडवर्टिजमेंट्स में हमें लेटेस्ट फैसिलिटीज़ के बारे में भी पता चलता है, डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हमें पता चलता है। दे प्रमोट द क्वांटिटी, द क्वालिटी इन द एडवर्टिजमेंट्स, अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलेगा व्हाट हैज़ कम इन द मार्केट, व्हाट इज़ द न्यू अपडेट। ऑल्सो दे टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट इश्यूज, जैसे वैक्सीनेशन हो गया, सोशल इश्यूज हो गया, जैसे पोलियो इम्यूनाइजेशन हो गया, या फिर फीमेल फर्टिसाइड हो गया, तो वो इसके बारे में बताते हैं। अभी फार्मर्स का रिसेंट है, उसके बारे में बताओ। कोरोना का है, कोविड का है, यू कैन टॉक अबाउट दैट। सो एडवर्टिजमेंट्स आर क्वाइट crucial, they give beneficial information to the children also. Suppose they are enlightening क्यों? अगर मैं children की बात करूँ, they are talking about the taste or which is good for health or not, health drinks, so उसके बारे में वो डिस्कस करते हैं। एडवर्टिजमेंट्स ऑल्सो टच द इशू लाइक वाटर कंजर्वेशन की एड हो गई, या फिर ट्री प्लांटेशन की एड होगी, अगेंस्ट द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन, स्वच्छ भारत अभियान। सो ऑल दीज कैंपेन्स एंड ऑल दीज एडवर्ट्स, दे आर एनलाइटनिंग ऑल्सो। तो ये एग्जाम्पल्स आपने देनी है साथ में। इन इग्नोरेंस मतलब वी इग्नोरेंस मतलब वी डोंट नो एनीथिंग, विदाउट नॉलेज, और वी इमिटेट, वी ट्राई टू, जैसे कि एडवर्टिजमेंट्स आ रही हैं, डर के आगे जीत है, एंड दे आर जंपिंग, दे आर माउंट वो क्लाइंबिंग द माउंटेन,
they are doing the stunts which can be harmful for the children. They try to attract, they try to imitate those things. So usme there will be a problem. It will be unwise if we get swayed by the misleading information. Swayed मतलब हम उनके साथ आगे बढ़ गए हैं, swayed हो गए हैं, flow हो गए हैं. तो information कुछ misleading भी होती है, and we just go by that. Next is children. They are the vulnerable targets. Vulnerable मतलब prone to, जो जल्दी से शिकार हो जाते हैं किसी चीज का. तो उसके लिए आप ये वाला वर्ड यूज कर सकते हो. Alluring adverts जैसे पहले बताया है, वो टेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, इल्योर करने की कोशिश करते हैं. और जिसकी वजह से, जैसे मैंने बोला कि चिल्ड्रन दे आर द वल्नरेबल, दे आर वल्नरेबल टारगेट्स. सो उसकी वजह से क्या होता है, दे आर अट्रैक्टेड by the colorful advertisements, and they get swayed by the misleading information. So what they do, they pester their parents. Pester hota hai annoy. They pester their parents to buy those things, and this can obviously upset the budget of many families. Like fast food हो गया, toys हो गया, without any reach, without any need. uh, Children try to annoy the parents कि मुझे ये टॉय चाहिए या मुझे ये फास्ट फूड, आई हैव टू ईट इट. सो उसमें दे एंडेड अप विद दिस थिंग, destroying the individuality. Obviously, if there is a discount offer in any shopping mall and they are buying the same thing, like this is 50% off, so everybody will buy, and this will destroy the individuality. Everybody will buy the same thing, so it will change it, right? So censorship honi chahiye, ye word zarur use kar sakte ho if you get a question according to it ki censorship honi chahiye. They promote the quantity but they tell us about the quality too. So onus matlab, this is a good word if you want to write. Onus is responsibility. The onus is on to look on to the real needs and not be swayed by the adverts. हमें ये ध्यान रखना है कि हम उसके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है हमारी कि हमें वो चीज चाहिए या नहीं चाहिए. Right, these were the words which you can use in any task. Means right, इसका कोई भी task आएगा तो आप उसमें use कर सकते हो. Now coming to the first question, इसमें कैसे use करना है? Words तो मैंने आपको दे दिया, I have given you the vocabulary, but how to use it, that is a problem, because उसमें आप करोगे. The question is, there will be 4 paragraphs here. In this one, in the first one, there will be 4 paragraphs. Right? Now, what will be the 4 paragraphs? The first one will be the intro. Then the next one will be the advantages. The third one can be disadvantages. And the last one will be the conclusion. And in the intro part, you will talk about which one outnumbers. कौन outnumber करता है? Means positive effects or negative effects. So जो positive side है उसमें आप उसकी सारी advantages बता सकते हो कि एडवर्टाइजिंग जो है वो इम्पोर्टेंट सर्विस है मैन्युफैक्चरर्स को, कंज्यूमर्स को, और इट एक्चुअली इट इज़ अ बून फॉर द इंडस्ट्री, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, क्योंकि ये इट इज़ क्रिएटिंग जॉब्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ पीपल. राइट? तो आप ये बोल सकते हो, और साथ में ये भी बोल सकते हो कि इट हैज़ बिकम द बैकबोन ऑफ मैनी इकोनॉमीज. ये इसमें आ जाएगा. जब when you are talking about the negative part, then you will talk about adverts also have a downside. अब वो कौन कौन से हैं? They tempt us without the insight of what we want and what we need. So in this case, you will complete it and you will write the conclusion. Moving next, advertising discourages the people from being different individual by making us all want to do and same and look the same. Now here you will talked about, means this is a debatable issue or not, because you are writing about कि उनका short term effect हो सकता है. Here you will say like this, and you whether you have to think whether you will agree or you will disagree, and then you will write about it. First of all check करो कि उसके positive point ज़्यादा है कि negative point ज़्यादा है. Then you will write the whole paragraph. Then you will say कि similarity is not because of ads, it is because of the comfort. आप ये कंक्लूजन में दे सकते हो. नेक्स्ट,
a large number of advertisements nowadays are targeted at children. Obviously, again, it is about the positive and the negative facts, but ये ज़्यादा जो है वो sensitive areas है, जैसे toy industry हो गया. So censorship should be there to limit the children's access to access advertisement. मतलब थोड़ा सा बच्चों के ऊपर ये वाली ad होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. This is because जो children हैं, they are under जो certain age limit है, तो दे लैक द एबिलिटी कि वो वाइज जजमेंट कर सकें कि व्हाट दे रियली वांट. सो दे आर जस्ट अट्रैक्टेड बाय, मैंने जैसे पहले बताया था, दे आर जस्ट अट्रैक्टेड बाय द पिक्चर्स, अट्रैक्टेड बाय द एडवर्टाइजमेंट्स एंड दे वांट टू गेट दैट थिंग. तो ये बोल सकते हो. Next, last one is consumers are faced with increasing number of advertisements from competing the companies. पहला question है, to what extent do you think consumers are influenced? So obviously you will write a paragraph and this and you will say consumers, वो backbone वाली line फिर से यहाँ पे आ सकती है. और आप ये बोल सकते हो कि इसमें वो नेगेटिव भी इन्फ्लुएंस होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, स्टंट्स के बारे में बोल सकते हैं, दोनों चीजें बतानी है. टू व्हाट एक्सटेंट मतलब दोनों. व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रोटेक्ट देम. अब इसमें हमें करना क्या चाहिए, मीन्स हमें इसको कैसे, सॉल्यूशंस आर नॉट सिंपल, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स जो है दैट इज अ परसुएसिव मीडियम. तो हमें एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो पहले चेक करनी चाहिए. कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स, आप इसमें सॉल्यूशंस में ये बोल सकते हो, कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, जिसकी वजह से कंज्यूमर शुड बी वार्न्ड अगेंस्ट टू मच कंज्यूमरिज्म. इवन जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं, दे हैव अ बिग रोल इन सिलेक्टिंग व्हाट प्रोडक्ट्स दे शुड एंडोर्स. और उसकी वजह से, क्योंकि हम उनको इमिटेट करते हैं, हम उनको कॉपी करते हैं, सो वी विल बाय द सेम थिंग एज दे आर डूइंग. सो पहले हमें वो गवर्नमेंट को ये चेक लगाना चाहिए. इवन द पेरेंट्स शुड कीप एन आई कि वो कौन सी जो है डिसीजन जो है वो वाइजली लेना चाहिए, वेदर दिस इज रिक्वायर्ड इन, एंड दे शुड नॉट अपसेट देयर बजट. फाइनेंशियली जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए और जो चीज़ें चाहिए सिर्फ वही जो है वो बाय करें. दिस वॉज अबाउट योर एडवर्टिजमेंट्स, राइट. टुमारो we'll do about education. There are so many questions on education. This is just an example जो मैंने अभी आपको दिया. There could be so many questions on advertisements only. लेकिन बात सारी वही है, सभी में सिर्फ हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ही बताए हैं, nothing else, right? So this was all, and this is the vocabulary. If you want to check, you can. If you do not get it, just watch the video again. Means इसको watch करके check करके फिर से दोबारा से करो. You will definitely get good band.